A very good evening, all of you guys. Welcome to Unacademy. Welcome to Creatics channel. So let's start the session. Just a minute. Okay. Good evening. Good evening. Just a moment. Okay. We can start the session. So please wait for just 2 minutes. The people are joining so that we can start the session. Okay, let's start. So, guys, many people are asking because this is the time for your revision in your preparation because hardly you have 5 months in your hand. ये 5 महीने पे आप कुछ करना चाहिए तो one of the best thing, one of the compulsory thing you need to do is your revision. ये proper से होना चाहिए compulsory. It affects your preparation a lot. So आपका preparation में बहुत affect करते हैं ये वाला revision वाला part. आप सही से किया तो it gives you a great result. नहीं किया तो all your efforts, whatever the energy you kept, all that energy might be going waste. So you should be very careful regarding the revision. So इसके बारे में आज मैं कुछ बोलना चाहिए आपको. Hardly half an hour I'll take the time of yours. So in this half an hour of the time I'll be giving you the inputs which can definitely help for making your preparation in the better possible way. Okay, so let me start with my introduction. This is Bhima Sankar sir. I hope you people knows me. I did my Mtech from IIT Kharagpur. I have 11 years of teaching experience in GATE and ESE throughout the country. In the last 10 years, I taught to several thousands of students like you people throughout the country. So with my experience, I'll be guiding you today for your preparation. So let's start the session. So सभी ठीक है ना? ऑडियो वीडियो कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? चलो. सो अन अकेडमी पे आज एक ऑफर चल रहा है भाई. आज ही लास्ट डेट है. सो आप कुछ सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो डोंट डिले इट फर्दर. यू कैन यूज माय कोड. You will get 20% off on your subscription. ठीक है. So this is the price you will be getting it. Right. Let's move. And this is for an academy like subscription. आपको कम as low as 10,000 पे मिल रहा है. This is also for test series and material चाहिए तो you can do this. Right. So this biggest comeback is going to happen on this next coming Sunday, guys. The link is available in the video description. अभी तक इतना big comeback तो नहीं हुआ. Around 30 crore का scholarship is available, guys. And here you will be getting many advantages. जैसा आपको कुछ what we call gadgets मिलेगा, कुछ कुछ लोगों के लिए fees refund मिलेगा. अभी तक इतना offers कोई भी comeback पे नहीं है. You will be getting this comeback on 25th. Don't miss this chance, guys. Please enroll. I feel that many number of students are going to attempt this exam. So if you attempt this exam, definitely you will be getting some advantage with respect to your experience, not only with respect to the gifts. Okay, chalo. So let's start. So revision के बारे में कुछ बात करना चाहिए. So revision strategy. Okay.
रिवीजन के लिए कुछ स्ट्रैटेजी है, रिवीजन करना नहीं करना, ये सभी चीज इस पर्टिकुलर सेशन पे डिस्कस करते हैं। चलो। हाँ, एक बात आप बोलो, रिवीजन स्ट्रैटेजी। ओके, वेरी गुड। रिवीजन हमेशा बोरिंग लगते, यू विल यू एक्सेप्ट इट और नॉट? मेनी स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, रिवीजन तो हमेशा बोरिंग है सर। रिवीजन पे आई मीन आई डोंट फील मोर कंफर्टेबल विद द रिवीजन सर, रिवीजन करने के लिए मन नहीं लग रहा है सर। ऐसा फीलिंग आपको भी है क्या? एक बार कमेंट सेक्शन पे कमेंट डालो, व्हाट इज योर फीलिंग रिगार्डिंग द रिवीजन। यस विश्वनाथ, 100%। ओके गुड। अदर्स भी बताओ यार आपका आंसर। रिवीजन हमेशा बोरिंग है ना? आप रिवीजन से फायदा है और नहीं है वो तो बात अलग है, वी विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है? अभी तो क्या, रिवीजन इज बोरिंग और नॉट? रिवीजन तो बोर फील हो रहा है और नहीं हो रहा है, आप ये बताओ। विश्वनाथन तो आंसर दिया, बाकी लोग भी, रिमाइनिंग स्टूडेंट्स आल्सो प्लीज रेस्पॉन्ड। यस Ajay, good. ठीक है. This is the most common thing because as a student, we want to progress, I mean, in the form of completion of the syllabus. We always love to complete our syllabus. We don't want to look back and revise the things. As a student, when I was a student, I also feel the same feeling. Okay, while preparing, I never like to revise the things. रिवीजन पे ये दिक्कत है, स्टार्ट करने वाले के लिए दिक्कत होता है। व्हेन यू स्टार्ट टू स्टार्ट द रिवीजन, योर माइंड डोंट कोऑपरेट, बट वंस यू स्टार्ट द रिवीजन यू विल एंजॉय। केवल एक ही चीज आपका माइंड पे नहीं होना चाहिए, क्या सर? टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। इफ यू हैव द फीलिंग दैट यू आर वेस्टिंग द टाइम बिकॉज यू कैन लर्न समथिंग न्यू इन दिस टाइम, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो सकते हैं सर, मैं उतना इतना समय रिवीजन पे, मैं तो ऑलरेडी ये सब्जेक्ट तो पढ़ा, फिर भी इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने नया सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है सर। ऐसा फीलिंग आपका माइंड पे है तो यू नेवर एंजॉय द प्रोसेस ऑफ द रिवीजन। बट अगर एक बार जान से सोच लो, इफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवीजन, ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवीजन, रिवीजन करने के लिए जरूरत क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या, एवरीथिंग इफ यू अंडरस्टैंड, इसके बाद आपको समझ होता है यस रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और बात, रिवीजन इज एंजॉयबल आल्सो। Many people will think that revision का में क्या है सर, I will not be learning anything ना, just I need to repeat the same things sir। नहीं है भाई। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके लिए, जैसा आपने एक मूवी देखा, ठीक है, एक आपको मूवी बहुत पसंद लग रहा है, दूसरा बार भी देखा, कोई भी समय पे आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिला क्या, सेकंड टाइम देखने समय पे ये पर्टिकुलर मूवी आज देखा, ठीक है, 2-3 महीने के बाद सेम मूवी दूसरा बार देखो, वो देखने समय पे आपको एक दो पॉइंट्स नया लगते, अरे यार लास्ट टाइम मैं ये पॉइंट को ऑब्जर्व नहीं किया, लास्ट टाइम ये है क्या, ये तो आई हैवंट ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस मूवी। ऐसा एक्सपीरियंस आपको होते हैं कंपलसरी, इफ यू हैव एवर सीन ए सेम मूवी फॉर 2 times 3 times, sometimes you always find something new in the second time, or the way you think will change in the second time। this is 100% true, you just cross check with yourself, this happens with your preparation also, ठीक है? सो डोंट टेक रिवीजन वेरी लाइटली, ऐसा मत सोचना रिवीजन पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द न्यू थिंग्स, फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज इट इज वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव स्टडीड अप टू नाउ, ठीक है? सो यू आर जस्ट सी, आप तो ऐसा जा रहे हैं, ओके, बट वट एवर यू हैव स्टडीड इट इज गोइंग, ओके, इट इज गोइंग, कितना दूर गया कोई क्या, दूर तो जा रहा है बट वापस तो एरेज हो रहा है, क्या क्या फायदा होता है? सो while you are making something, you should protect what you have done and you should progress, both things should happen parallelly, then only you will be able to succeed। सो ये बात आप कंपलसरी याद पे रखो। सो रिवीजन का समय पे दो चीज होती है, वट एवर यू हैव स्टडीड you recollect, that is fine, that is the basic important thing, basic important need for the revision। इसके अलावा एक एक दो बार ऐसा होता है, when you are doing revision of a subject your concepts will become more and more stronger। ऐसा होता है यू फील, अरे यार दिस टाइम आई लर्न प्रॉपरली, आई अंडरस्टैंड प्रॉपरली, अरे दिस टाइम रिवाइज करने समय पे मेरे को ये चीज समझ हो रहा है, लास्ट टाइम आई हैव सम डाउट हियर, नाउ आई डोंट हैव दिस डाउट, लास्ट टाइम मैं ऐसा एनालाइज नहीं किया बट ऐसा एनालाइज करके भी आंसर मिल रहा है। ये सभी चीज, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैपेंस विद मल्टीपल रिविजन्स ओनली।
मैं तो नेटवर्क सब्जेक्ट कम से कम 400 से 500, listen to me, because I taught in offline earlier, around 500 times at least I could have taught. Every 10 days I used to teach the same subject again. जैसा मैं तो कम से कम ऑनलाइन के आने के बाद 2-3 महीना लग रहा है, because I hardly daily 2 hours ले रहा हूँ, but earlier daily 10 hours like that. हर वीक नया सब्जेक्ट, हर वीक नया सब्जेक्ट, एक साल पे 50 बार मैं तो नेटवर्क्स आई यूज टू टीच, डिजिटल आई यूज टू टीच, इतना बार, ठीक है। सो सोच लो क्या होता है, आफ्टर 10 years एटलीस्ट 500-400 टाइम्स आई कुड हैव टॉट माय नेटवर्क एनालिसिस, मेरा डिजिटल सर्क्यूट्स। इसके बाद प्लीज अंडरस्टैंड, इवन आई टीच द सेम सब्जेक्ट 100 टाइम्स, 400 टाइम्स, 500 टाइम्स, एवरी सिंगल टाइम आई टीच, some point of time पे मेरे को न्यू पॉइंट और न्यू अप्रोच विल स्ट्राइक टू माय माइंड एंड आई विल improve my content. The same thing happens in your preparation also. आप एक ही सब्जेक्ट 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद you will become expert or perfect in your subject. So there is a compulsory need for the revision. So let's move further. Okay. So is it really worth to revise? आप लोग अभी आप बताओ, yes or no? Yes or no? Very good, very good. Yes, it is really okay. Please listen to my whatever I am saying first. Then we can discuss. मेरा बात सुनो पहले, मैं कुछ बोलना चाहिए ना, उस ये बात पूरा कंप्लीट होने समय तक आपका सारे डाउट्स तो 100% क्लियर हो पाएगा। आपका माइंड पे जो जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। बट इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स है तो 100% यू कैन आस्क मी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू, आई विल बी एबल टू आंसर यू। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फर्दर। सो टेल मी गाइस, इज इट रियली वर्थ टू रिवाइज? रिवीजन करना जरूरत क्या है, जरूरत है क्या? Or is it really worth? Definitely double worth. Double worth or triple worth. Without revision, you don't never feel that you have completed a subject. आज आप नेटवर्क एनालिसिस का क्लास अटेंड कर रहा है और एनालॉग सर्क्यूट्स का क्लास अटेंड कर रहा है, क्लास तो कंप्लीट हो गया भाई। कंप्लीट होने के बाद योर सब्जेक्ट प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीटेड। कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप इज अटेंड द क्लास, ठीक है। During the class itself, you should revise the notes. While attending the next class, previous class का notes revise करके next class पे आना चाहिए. This is the mandatory thing. So the first revision of yourself unknowingly happens while studying itself. Okay. Very important thing. Do all questions. Many people don't do this of class again. अरे भाई नहीं सर, मैं हमेशा नया कुछ मटेरियल उठा के इससे क्वेश्चंस करता हूं सर। आई नेवर वरीड अबाउट द क्लास क्वेश्चंस ऑलरेडी डन इन द क्लास सर, बिकॉज ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया ना सर, मैं मेरे को पता है ये क्वेश्चंस का आंसर। ऐसा नहीं, एक बार सॉल्व करके चेक करो, यू विल एंजॉय दिस। ओके, you will be getting the original confidence after doing it, because when I am solving a problem, you listen to it, you understand it, that's a different thing, but when you solve on your own, it's a different thing. So इसके लिए कंपलसरी आपको एक्सपीरियंस होने के लिए एक बार सारे क्वेश्चंस इन द क्लास करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट। मेनी स्टूडेंट्स विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अरे सर मैं तो बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं आ रहा है सर, सब भूल गया सर, मैं तो इतना सब्जेक्ट्स है सर, इतना फॉर्मूलास है सर, याद करना तो बहुत बहुत मुश्किल है सर, ये गेट एग्जाम पे रिवीजन मेरा को टफेस्ट पार्ट इन माय प्रिपरेशन सर, ऐसा सोचते हैं लोग। नहीं भाई, लिसन, first you should understand it is quite natural and it's a human thing to remember and to forget also, ठीक है। हमारा ब्रेन तो ऐसा है भाई, वो याद भी करते हैं, ओके, भूल जाते हैं, दोनों होता है ये तो। इट इज क्वाइट नेचुरल थिंग, इट इज नॉट लाइक यू आर जस्ट कमिंग फ्रॉम सम अदर प्लैनेट एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैपनिंग टू यू ओनली, ऐसा कुछ नहीं। इट हैपेंस टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, इसमें लेवल अलग हो सकते हैं। मे बी फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर, व्हेन आई टीच एनी सब्जेक्ट, बार बार पढ़ने के बाद, सपोज आई एम टीचिंग ए सब्जेक्ट विच आई टॉट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, while teaching that subject I don't get any difficulty, but मेरा सब्जेक्ट में तो नया सब्जेक्ट ले लिया, 2-3 बार ही पढ़ा, उस समय पे इट इज क्वाइट नेचुरल, आई विल आल्सो फॉरगेट द थिंग्स, ठीक है। इट इज क्वाइट नेचुरल। सो आप पैनिक मत होना चाहिए, ये मेमोरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पैनिक। सो आपका मेमोरी जो है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत जाना, ठीक है।
एंड आपका मेमोरी जो है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैनिक। अरे भाई भूल जाते हो जाएगा ऐसा ही। ठीक है, नहीं सर, आई डोंट माइंड वेदर आई रिमेम्बर और नॉट, दोस थिंग्स ऑटोमेटिकली प्रेजेंट इन योर माइंड। इतना देखो, इतना आदमी को ह्यूमन माइंड जैसा मेमोरी आपको दुनिया पे कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यू रिमेम्बर जस्ट ए पर्सन बाय लिसनिंग टू हिज वॉइस। कितना भी लोग है तो उतना लोग का डिफरेंट डिफरेंट वॉइस आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके अंदर एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, इतना मेमोरी है आपके पास। आप फेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सारी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपका घर का एड्रेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यू आर एबल टू रिमेम्बर। व्हाई कांट ए सब्जेक्ट? डेफिनेटली यस, बट इट टेक्स ए टाइम, it takes a time. It is a quite natural thing. Everybody will forget after some time, even he is a topper, gate top वन रैंक आने वाले बच्चों को भी ये होता है। ठीक है, सो आप ये मत होना चाहिए, डोंट बी पैनिक ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। दिस इज द क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम विथ मेनी स्टूडेंट। टू थिंग्स, टू कॉमन प्रॉब्लम्स में बोल रहा हूँ। फर्स्ट थिंग क्या, feel people will feel revision is a waste of time. Nine, revision is the best thing you should do for your preparation to protect what you have studied up to now. It is a mandatory thing. So compulsory आप ये mind पे रख लो। ठीक है, while you are doing the revision, be happy, don't be sad that अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा मत सोचना। इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग यू। यू आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है भाई, आपका टाइम इफेक्टिवली यूज हो रहा है, आपका प्रिपरेशन को आपने प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा सोच लो, ऐसा सोच लो। इज इट क्लियर? दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग इज डोंट बी पैनिक। मेनी स्टूडेंट्स, मैं तो बहुत बच्चों को देखा, while studying any tough concept, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना लंबी है तो, कोई भी डेरिवेशन इतना लंबी है तो, कोई भी फॉर्मूला इतना लंबी है तो इमीडिएटली चिंता स्टार्ट होता है भाई। ये लोग सोचते हैं अरे सर, इतना बड़ी फॉर्मूला, इतना डेरिवेशन, इतना बिग कॉन्सेप्ट, दीज मेनी फॉर्मूलाज, हाउ टू रिमेंबर? नेवर स्टडी to remember the things. First, always study to understand the things. While attending the class itself, many people will feel some subjects as difficult because too many formulas. It is not the way. Too many logics, too much difficult to understand, then only you should worry. Too many formulas है तो you need not worry about it. Okay, so many students जैसा बोर्ड में लंबी वाला डेरिवेशन आएंगे तो आपका इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि आपका माइंड ऐसा ट्यून हो गया, माइंड ऐसा प्रिपेयर हो गया क्या, every time while listening to the class you always try to remember the things। ये मत करना, always first try to understand, आराम करो, अरे यार okay I understood, how to remember बाद में आएगा। That doesn't happen if you intentionally try to remember, it will happen via process। If you are able to understand the things, 50% you remember automatically। If you revise more frequently without any intention, you will remember। Do you remember the name of your friend because you need to remember, you need to remember, you एग्जाम पे आएगा इसलिए मैं याद किया क्या? नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट हैपेंस विदाउट योर एनी इंटेंशन। सो नेवर स्टडी टू रिमेंबर द थिंग्स गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी पैनिक, अरे सर दो चार सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गया, आई एम रीडिंग द फिफ्थ सब्जेक्ट, नाउ आई एम वरिंग मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट भूल गया सर। नहीं, वो तो नहीं, कोई भी जगह पे नहीं जाएगा, आपका माइंड पे एक कमरे पे है। ठीक है, बट क्या होता है भाई, you need to recollect it, you need to revise it, it will never go, whatever the effort you kept to read any subject will never go anywhere। Okay, please believe in all these things before starting this session guys। चलो let's move। मेरा पास इतना साल का एक्सपीरियंस, इतना डिफरेंट डिफरेंट जगह से बच्चों को मैंने देखा, सो उनका प्रॉब्लम्स को मैंने सुना। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम गिविंग द इनपुट्स। जैसा नहीं, हर दिन पे हमको व्हाट्सएप में बहुत सारे स्टेटस मैसेजेस, मोटिवेशन कोट्स तो मिलते हैं भाई, बट इट इज आई एम गिविंग यू वट एवर विथ माई एक्सपीरियंस। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एवरीथिंग यू कैन रिमेम्बर, एवरीथिंग यू कैन डू, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो लेट्स लिसन। सो वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग तो आंसर करो भाई, कितना बार रिवाइज करना चाहिए आपका प्रिपरेशन पे, आप लोग बताओ। अरे बताओ भाई। ऑडियो का प्रॉब्लम है? इज इट ओके नाउ? ऑडियो इज ओके? मैं तो नेक्स्ट टाइम में ऑडियो को कुछ चेंज करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। देयर इज सम ऑडियो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी सेइंग दैट।
एक मिनट है, मैं चेंज करता हूँ। Speak first. Hello. Yeah. Is this audio fine now? Maybe audio का आवाज कम होता है, but there will not be any noise. ठीक है ना? ओके। ऑडियो तो लो है, बट आवाज में कुछ दिक्कत तो नहीं है ना अभी? लो ऑडियो। एक मिनट। अभी तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे आया। नहीं है तो पिछले वाला लाता हूँ। सॉरी, एक्चुअली मैं तो क्रॉस चेक नहीं किया इसलिए। तो शैल वी कंटिन्यू गाइस? वॉल्यूम तो है, ठीक है, क्या करें? कोई अल्टरनेटिव नहीं। Just a moment guys, I'll help you. Just give me 2 minutes. 1 minute यार, I'm sorry for the delay. Now please check, is it okay? कुछ नॉइस आ रहा है क्या? सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरे पास माइक तो है ही यार, ये तो काम नहीं कर रहे, दो तीन माइक है। यू आर गोइंग राइट, ओके। प्लीज टेल मी नाउ, इज इट फाइन? ओके। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई विल क्रॉस चेक। सो कितना बार रिवाइज करना आप लोग, ये आंसर, इसका आंसर बताओ। सो कितना बार रिवाइज करना? सो डिफरेंट पीपल तो डिफरेंट आंसर। सो ललित सिंह ने दिया आंसर 3 टाइम्स। ठीक है, एनी अदर आंसर? ओके, एनी अदर आंसर? Any other answer by anyone else? How many times we need to revise? How many times we need to revise? Okay. Thank you so much, Said. Okay. Sahil तो बोल रहा है until unless the complete clear. Okay. I don't think any particular, as much as possible. सारे आंसर सही है। एक दो लोग तो 3 बार बोला right answer. As much as many times as possible, perfectly right answer. As long as your concepts are clear, right answer. ठीक है, all are correct. But आपके पास टाइम तो कम है ना, सो जितना बार भी आप रिवाइज किया तो उतना बार फायदा तो होता है कंपलसरी, कोई डाउट ही नहीं है इस पे।
बट क्या दिक्कत है मीन्स आपके पास टाइम अवेलेबल इज लिमिटेड। वो लिमिटेड टाइम पे यू शुड स्टडी द न्यू सब्जेक्ट्स एंड आल्सो प्रिपेयर फॉर द प्री आई मीन यू शुड आल्सो प्रिपेयर द सब्जेक्ट्स, रिवाइज द सब्जेक्ट्स विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सो कंपल्सरी जो लोग बोल रहे हैं ना दैट इज करेक्ट, कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए। बट ये 3 टाइम्स आपका रिवीजन सेम ही तरह से नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट टाइम रिवीजन अलग से होना चाहिए, सेकेंड टाइम अलग स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए, थर्ड टाइम अलग स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए। सो लेट मी एक्सप्लेन दीज थिंग्स। सो लिसन हियर। सो बिफोर दैट, हाउ मेनी कितना घंटे आप रिवाइज करना चाहिए? सो आई कैनॉट से द नंबर ऑफ आवर्स बिकॉज हर डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे प्रिपेयर करते, टाइम्स इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी। आई कैन से अभी तो 5 महीना आपके हाथ में, प्रेजेंटली 30% to 20 to 30% of your प्रिपरेशन टाइम रिवीजन को दे दो भाई, ठीक है। बट दिसंबर के बाद जैसा जनवरी पे 100% टाइम रिवीजन को ही देना चाहिए। इसका मतलब क्या? whatever you do by December 31st आपका सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड। सो दिसंबर के बाद जनवरी का महीना पूरा रिवीजन करना चाहिए, ओके। एंड फरवरी पे थर्ड रिवीजन और यू कैन से रैपिड रिवीजन करना चाहिए। रैपिड रिवीजन का मतलब क्या? एक दिन पे एक सब्जेक्ट, एक दिन पे एक सब्जेक्ट, एक दिन पे एक सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम दिन के पहले 3 घंटे पे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे पे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे पे एक सब्जेक्ट। जैसा केवल फरवरी पे यू शुड रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स कैसा पॉसिबल है सर? जैसा फर्स्ट टाइम जैसा कॉम्प्रिहेंसिव वे पे नहीं जाएगा इस समय पे। इस समय पे यू शुड गो बाय शॉर्ट नोट्स। आई विल कम टू दैट स्ट्रेटजी, ओके, डोंट वरी। सो लेट्स मूव, ओके। सो हाउ टू रिवाइज सर? ठीक है, आई टेल यू द डिफरेंट वेज। अगर आप सेकेंड ईयर बच्चों है तो आप लोग दूसरा बार वीडियो लेक्चर्स देखो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वर्थ। बट आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स नहीं, आपको 2023 का एग्जाम देना चाहिए, तो डोंट रिवाइज फ्रॉम द वीडियोस, इट इज नॉट सजेस्टेबल एट ऑल, ठीक है। बिकॉज ये तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलो, सो द फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम योर लेक्चर नोट्स। सो आपका लेक्चर नोट्स इज द फर्स्ट थिंग यू शुड टेक केयर। इससे आपका रिवीजन होना चाहिए, ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज you can revise from the short notes you make while preparing your subject. Short notes can be done at any moment of the time. I'll explain about that also. Nahi hai to the third point is you can prepare, revise from exams or problems. This is my approach or the most practical approach. ठीक है, ओके। आज मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। बट ऑल दीज थ्री आर वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो लेक्चर नोट्स से आप रिवाइज करने समय पे, कम समय पे यू विल बी रिवाइजिंग ए लॉट। सो व्हेन टू रिवाइज सर? आपको मैं तो बताया कितना घंटे रिवाइज करना। प्लीज लिसन वन थिंग, रिवीजन का समय पे योर माइंड नीड नॉट बी वेरी मच एक्टिव। इसका मतलब जैसा आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अब घर से कॉलेज तक कोई बस पे जर्नी करके जा रहे हैं और कोई भी जगह पे जा रहे हैं, आप ट्रेन पे है और कोई भी समय पे आप म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस समय पे यू कैन डू द रिवीजन पैरेलली बिकॉज यू आर स्टडीइंग द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एर्लियर। This has some sort of comfort, utilize it. So to make your revision more interesting, you can listen to the songs and revise the things because you are not listening to the lecture at that time. Your mind is open and free. It can concentrate on the revision and it can enjoy the songs also. Or you are going to college every day, 1 hour you are wasting in the journey. Or in the college during the classes, many hours you are free. वो वाला नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, उस समय पे आपने रिवीजन किया तो ज्यादा टाइम एफिशिएंट वे टू प्रिपेयर होता है। नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ नहीं, मैं तो घर पे बैठ के सुबह से शाम तक मैं खाली है, कोई काम नहीं है, तो यू कैन रिवाइज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। बट मेरा सजेशन, यू रिवाइज व्हेन यू फील
इस समय पे मेरा माइंड नहीं लग रहा है टू स्टडी न्यू थिंग्स, आई एम नॉट रेडी टू स्टडी न्यू थिंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड, रिवीजन एक एडिक्शन है भाई। स्टार्ट करने पे थोड़ा सा रिलक्टेंस होता है, बट आपने स्टार्ट किया तो यू विल एंजॉय। क्यों एंजॉय करते हैं? इट इज ऑलरेडी यू नो द थिंग्स, while studying you will enjoy this process. Okay, so revision पे your mind is not working very hard, your body is more relaxed, so this process is more enjoyable compared to regularly studying a new subject. But दिक्कत कहाँ पे होता है? While studying the new subject you get some inputs, yes I am learning something new, I am completing my syllabus, this will dominate. But while revising the things, which one will dominate? टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा माइंड से सब्ट्रैक्ट करो। विदाउट रिवीजन हाउ मनी टाइम, हाउ मच यू स्टडी, इट इज ऑफ नो यूज। सो रिवीजन इज वेरी प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन गाइस। बट यूटिलाइज द टाइम वेयर यू कैनॉट स्टडी द न्यू थिंग्स, उस समय पे रिवीजन करो, ज्यादा टाइम एफिशिएंट प्रोसेस होता है। सो रिवीजन करने के तरीका क्या? लेक्चर नोट्स ले लो, पीडीएफ, प्रिंटेड, हैंड रिटन, इट इज योर कन्वीनियंस, कोई भी ले लो। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, रीड एवरी सिंगल लाइन वन बाय वन, डू एवरी सिंगल प्रॉब्लम अगेन। दिस इज हाउ यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स। रिवीजन का मतलब ये नहीं डायरेक्टली फॉर्मूला उठा के देख के मेरा रिवीजन हो गया भाई, ऐसा नहीं, दैट डजंट वर्क, दैट डजंट वर्क। सो रिवीजन पे यू शुड बी स्टडिंग एफिशिएंटली। जैसा एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 100 आवर्स इट टुक, रिवीजन करने समय पे मे भी कम से कम 20 घंटे लगेगा, बट इट इज वर्थ। द नेक्स्ट थिंग इज मेक ए शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉर्मूला। Okay, I will give you example how to make a short notes. Okay, all these things, and इससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड वन वेरी इफेक्टिव वे इज राइट द एग्जाम्स एंड रिवाइज। दिस इज मेरा सजेशन, मेरा सजेशन तो ये है। लिसन, let's leave everything about revision. Okay, just 5 minutes I want to do some experiment with you. ठीक है, so इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट that will give you one great idea about your revision. Okay, please tell me the answer of this question. Please open your pen and paper, please try this question and tell me the answer. Suddenly I'm asking, please try this question and tell me the answer, please quickly solve it. Okay, मैं तो आपके लिए 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, so please participate it, definitely you will be getting worth. Hardly I may take 10-15 minutes to finish this session, but this is the very important part of this entire session. Please try this, please try this. अरे यार शॉर्ट्स, is it possible to crack gate from tier 3 college? Definitely yes. Okay, it doesn't matter from where, which college you studied, doesn't matter. Okay, लेक्चर देखने के बाद जनरली टीचर तो नोट्स दे रहा है भाई, डीपी टाइम है तो यू कैन डू या फास्टली। इमरान, सभी लोग ट्राई करो यार, थोड़ा सा मेहनत करके पेन एंड पेपर उठा के ट्राई करो, डेफिनेटली यू विल फील, यू विल गेट हैप्पी, आई मीन यू विल गेट सम डिफरेंस। ओके, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं, मैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं लाया, इंटेंशनली कुछ क्वेश्चंस तो लाया। इन द गिवन सर्क्यूट द पैरामीटर के इज पॉजिटिव, ठीक है भाई, द पावर डिसिपेटेड इन द 2 ohm रेजिस्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 5, ये तो V0/2। ओके, V0/2 is entering, KV0 entering, 5 is leaving. Okay, fine. Next, another thing is the power dissipated is 12.5. So here V0 square by 2 is 12.5. V0 equal to 5. Okay, so substitute here, minus 5 by 2 minus K into 5 plus 5 equal to 0. So 5K equal to 2.5 तो दे लो, K equal to 0.5। आपको भी सेम आया? क्या हुआ यार, आंसर्स नहीं दिया? टेल मी सर, रिवीजन स्ट्रेटजीज में प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व कर रहे हैं? मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज लिसन। ओके, K इक्वल टू 0.5 आया, -2.5, मेरे को 0.5 ही आ रहा है, ठीक है। आंसर तो ज्यादा आई मीन फायदा नहीं, आई मीन इट इज नॉट माय इंटेंशन, आंसर मे बी हियर
मेरे हिसाब से 0.5 इज करेक्ट है। 0.5 करेक्ट और नॉट, लेट मी चेक। ये तो 2.5, ये तो 2.5 होना चाहिए। 0.5 इंटू वी नॉट करेक्ट, 2.5, 0.5, 0.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एक और क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, जस्ट टू क्वेश्चंस, देन आई विल कम बैक टू द कॉन्सेप्ट। ओके, इंटेंशनली मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है। चलो लिसन हियर, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। ठीक है, चलो भाई, लिसन हियर। ये तो 6 वोल्ट। ठीक है, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, आंसर दे दो। अरे यार, इसको हियर द क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हियर एग्जामिनर तो दिया 12.5, वी नॉट स्क्वेयर बाई टू इज पावर इज 12.5, फ्रॉम दैट आई गॉट वी नॉट इक्वल टू 5। केवीएल लगाओ, केसीएल लगाओ, वी नॉट बाई टू, के वी नॉट एंड 5, entering equal to leaving, from that I obtained the k। okay, here my intention is not to understand the concept of network, मेरा इंटेंशन तो अलग है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो सॉल्व करो भाई। कितना आया आंसर, बताओ। व्हाई इट इज नॉट विजिबल फॉर मी, आपको भी विजिबल नहीं है क्या? हाँ, इट इज विजिबल, थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम है बट विजिबल। ओके, देखो, दिस इज 6, बिकॉज बाय नेगेटिव फीडबैक कॉन्सेप्ट वर्चुअल शॉर्ट, ये भी 6 है। ठीक है, ये 6 है तो बिकॉज इसमें कोई करंट नहीं चलेगा, वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये 3 होता है, बिकॉज 24 एंड 12। ओके, R1 by R2 equal to V1 by V2, so this node voltage is 9। so here how much current will flow? 3 by 12, 3 by 12 is, here how much current will flow? 9 by 12, total how much current will flow? 3 plus 9, 12 by 12, 1 milliampere। ठीक है, so this current also you assume 1 milliampere, assuming base current is 0। ठीक है, so this node voltage is 12, this voltage is 6, 9, 12 minus 15 minus 9 is 6, so power dissipated equal to 6 into 1। is it clear? millivolts कौन है यहाँ पे? ठीक है, मिली आ रहा है, राइट। सी हियर, ओके, जेनआर डायोड तो 6 है, ये भी 6 है, ये तो 6 है। by voltage division principle this is 3 and total will be 9, 6, 12 minus 9, VCE equal to 6। this current is the sum of these two currents, so 3 by 12 plus 9 by, total is 9 na, 9 by 12, so 12 by 12 will give you 1 milliampere of current, so multiplication of these two will give me the voltage, but I mean power consumed। okay, fine, right? So listen here, what I want to say is, here my intention to solve these questions is like this. You have not revised anything. Okay, you have not revised anything. You have not revised these subjects today. But when I start these questions, automatically your mind started thinking or not. Believe in me, 70 to 80% of the gate questions are like that. You don't need to apply any formula. आपको concept याद है तो solve कर सकते हैं। सो डायरेक्टली आप एग्जाम हॉल पे जाओ, आपका प्रिपरेशन सही से हुआ तो बिलीव इन मी इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। like that actually I thought of taking 10 questions you will be able to solve, after that you will realize that take randomly 10 questions, solve it, you will understand, अरे यार मेरे को याद है ये सभी, मैं तो अननेसेसरी चिंता हो रहा है, मैं तो अननेसेसरी वरी हो रहा है,
ये तो बहुत आई मीन मेरा माइंड तो काम कर रहा है ऐसा सोचते आप, ठीक है। बिलीव इन मी, योर माइंड कैन डू द मैजिक्स unknowingly. You already remember many things. I need not say anything. 100%. Anytime I ask you, you can say KCL correctly, KVL correctly, node analysis correctly, mesh analysis correctly, because ये सभी conceptual है। ये कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चंस आएगा 70 to 80%, बाकी 20% तो फॉर्मूला बेस्ड हो सकते हैं। जैसा मॉसफेट में म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर बाई टू, जैसा एक दो फॉर्मूलास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, it will happen। Okay, so now listen here, so conceptual things will be clear automatically when you study the lectures, ठीक है। the this exam में तो ये क्यों बोल रहा हूं, here conceptual questions होता है, ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सेशन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एंड सम टोटली न्यू अदर गैलेक्सी से आती है भाई क्वेश्चंस, जो तो टेस्ट सीरीज में होता है ना ऐसा, एक ये तो फ्रंट से बैक को दे कैन ट्विस्ट द क्वेश्चन लाइक एनीथिंग दे विल आस्क यू, ओके लीव इट। Whatever you do the revision and all those things, generally people are confusing because the new questions they will think their preparation is not going properly, okay, that is not correct, okay, there is nothing to do with this, okay, something sometimes it happens the questions looks new or something, if something comes some completely made new questions, there is nothing to do with the revision for that conceptual questions you automatically remember। सो रिवीजन कहाँ पे फायदा होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा ट्रांजिस्टर का मॉसफेट का इक्वेशन देखो, मॉसफेट का करंट इन द सैचुरेशन ऑफ, ओके, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर, जैसा सम फॉर्मूला देखो, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो होता है ना, उस समय पे रिवीजन फायदा होता है। इसके लिए मैं एक अप्रोच बोल रहा हूँ, डायरेक्टली ब्लाइंडली you solve the problems or PYQs without any revision. Don't stress to remember the formulas. Happily read the notes and do this. No problem, no problem. But while doing this ना, some question comes based on this formula, you are not able to do। उस समय पे आप क्या करना, मार्क करो। अरे भाई मेरे को यहीं पे दिक्कत हो रहा है, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा शॉर्ट नोट्स में ये फॉर्मूला को अपडेट करता हूँ। दिस इज द राइट वे टू मेक ए शॉर्ट नोट्स गाइस, ओके। वंस यू कमिट ए मिस्टेक, add that formula, you never forget in your entire life, पूरा जिंदगी तक आपको याद होता है भाई ये। please remember this will definitely happen। this is the reverse engineering, you should do it। first write the exam, एग्जाम से सीखो कहाँ पे गलत हो रहा है। अरे सर एग्जाम लिखता हूँ, मेरे फॉर्मूलास याद करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा देर आर सम फॉर्मूलास विच आर नॉट कमिंग इन द एग्जाम, इसलिए मल्टीपल एग्जाम लिखो, मल्टीपल प्रैक्टिस करो, सारे पीवाई चूज करो, ऑलमोस्ट एवरी फॉर्मूला विल बी कवर्ड, ठीक है। एनीवे यू आर ऑलरेडी वाचिंग द लेक्चर and making this sufficient because it is very interesting if you do by this method। नहीं है सर मैं सारे फॉर्मूला लिख के I will read, I will mug up, I will mug up, I will mug up, it will, that is the reason revision is not interesting for you, revision is boring for you, but आप ऐसा करो, revision will be more interesting, ठीक है। सो बार बार प्रॉब्लम करने समय पे आप सोच लो इस तरफ से ये क्वेश्चन नहीं क्यों नहीं करना, अरे ऐसा भी कर सकते क्या, ऐसा सोच लो, इट विल बी वेरी मच फन, ठीक है। चलो, सो डिफरेंट वेज टू रिवीजन, मैं तो ऑलरेडी यही पे बताया ना, दीज थ्री रिविजन्स। स्ट्राइट अवे लेक्चर नोट से प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स करो। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, यू शुड राइट द एग्जाम्स, सॉल्व द पीवाईक्यूज, इससे आपका शॉर्ट नोट्स को अपडेट करो, दैट इज द फीडबैक यू शुड टेक इट, ठीक है। दिस इज द नोट्स, ठीक है। एंड हियर हमारा, हम इंजीनियर्स है ना इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। देन व्हाट वी नीड टू डू, एग्जाम लिखो, एग्जाम से फीडबैक ले लो, वो फीडबैक के आपका शॉर्ट नोट्स अपडेट करो, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा कर लो, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है। चलो, फर्स्ट वॉच द लेक्चर, मेक द नोट्स, notes can be made by you, notes can be provided by the teacher, or notes can be downloaded from the pdf of the class।
It is according to the time available for you. चलो, so first revision पे you can give more time. कितना time दे रहा हूँ? Roughly I am saying 20% of time you require to complete the regular time of subject. Okay, then make short notes. So first revision should be completed, okay, in parallel with your preparation of the subject, okay. So by after December 31st, by December 31st, you should complete your subjects firstly. First time complete hona chahiye sare subjects. Then while doing, so never wait up to the completion of the last subject. While preparing for the fifth subject, fourth or third subject का revision शुरू करो. Okay, revision LIFO में करो. Last input, first output. फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो आपने प्रिपेयर किया ना वो तो लास्टली आई मीन यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फिफ्थ सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट को रिवाइज करो ऐसा करो ठीक है नाउ लिसन हियर जनवरी पे ओके यू डू योर ओन वे मैं तो एक सजेशन दे रहा हूं 3 days 1 subject और 6 days 2 सब्जेक्ट ऐसा टारगेट रख के आप एग्जाम्स भी देना चाहिए पैरेलली बट रिवीजन ऐसा करना 3 दिन पे एक सब्जेक्ट 3 दिन पे एक सब्जेक्ट 3 दिन पे एक सब्जेक्ट ओके पूरा नोट्स पढ़ना चाहिए तो पढ़ो कोई क्वेश्चंस करना तो करो कोई भी मेथड पे यू कैन गो देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल हियर बट 3 दिन एक सब्जेक्ट 3 दिन एक सब्जेक्ट ठीक है ये स्ट्रेटजी फॉलो ठीक है जनवरी पे 30 दिन है 10 सब्जेक्ट्स आराम से हो पाएगा नहीं तो इजी सब्जेक्ट है तो 2 दिन पे कंप्लीट करो पावर सिस्टम्स मशीन जैसा लंबी सब्जेक्ट है तो 4 दिन दे दो कोई दिक्कत नहीं मेजरमेंट जैसा सब्जेक्ट एक दिन पे कंप्लीट करो इट इज योर ओन वे मेक द टाइम टेबल लाइक दिस ओके एक ही सब्जेक्ट आप रिवाइज करने के लिए बोर लग रहा है तो 2 सब्जेक्ट ले लो बट दिसंबर 31st तक आपने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किया तो ये सारे चीज पॉसिबल नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल ओके सो दिस इज नेक्स्ट थिंग ओके रिवीजन 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 इट विल गिव यू परफेक्शन जितना बार रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो फाइनली यू विल गो टू द परफेक्शन ठीक है थर्ड रिवीजन ऐसा होना चाहिए इट नाउ यू शुड नॉट ओपन द नोट्स केवल आपका बाय दिस टाइम योर शॉर्ट नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द experience first maybe you take a notes you take a subject you make a short notes normally the formulas याद करने वाले सभी एक जगह पे लिखो कोई दिक्कत नहीं बट एग्जाम लिखने समय पे कोई भी पॉइंट यू आर फॉरगेटिंग यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर इसको रिवीजन पे शॉर्ट नोट्स तो अपडेट करना चाहिए नाउ क्या करना थर्ड रिवीजन कब होता है सर फरवरी पे ठीक है हियर 1 डे 2 सब्जेक्ट्स होना चाहिए एक दिन पे 2 सब्जेक्ट एक दिन पे 2 सब्जेक्ट कैसा होता है सर इसमें कंपलसरी 1 फुल लेंथ एग्जाम लिखना चाहिए आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो हर सब्जेक्ट को 3 पेज का नोट्स बनाओ रीड दैट फुल लेंथ एग्जाम दे दो एग्जाम देने समय पे आपको कुछ याद नहीं आया immediately update the notes okay this is the second third revision you should do okay this is the way you can do the revision properly definitely you'll be able to succeed guys okay short notes में तो ऑलरेडी बताया ना इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कैसा बनाना पहले कोई भी सब्जेक्ट उठाओ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है सारे ट्रांसफॉर्म्स जेट ट्रांसफॉर्म टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ओके डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होता है ऑल द प्रॉपर्टीज यू राइट लाइक दैट ऑल ट्रांसफॉर्म्स फोरियर का लैपलेस का जेट का 3 पेज का नोट्स बनाओ दैट विल बी ब्यूटीफुल पूरा नेटवर्क आई मीन पूरा सिग्नल्स पढ़ने समय पे कितना भी टाइम लगेंगे तो लगाओ बट ये शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाओ हर सब्जेक्ट को शॉर्ट नोट्स कंपलसरी बनाना चाहिए ओके एंड इट शुड बी अडेप्टिव हर चैप्टर में शॉर्ट नोट्स में 1 पेज और हाफ पेज छोड़ दो दैट यू शुड improve while writing the exams okay चलो so the most common challenges faced by many students they don't believe in their memory आप ये गलत मत करना थर्ड पॉइंट अनदर पॉइंट इज दे फील रिवीजन इज नॉट वर्थ रिवीजन पे टाइम हो रहा है ये सभी चीज आपका माइंड से उठा दो ठीक है एंजॉय द प्रोसेस ऑफ द रिवीजन ओके you will be able to remember the things recollect the things believe in me all the magic happens in the examination hall no doubt in it lower confidence hai to you there are more chances you will forget many number of things
आप लोअर कॉन्फिडेंस में मत होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्फिडेंस से प्रिपेयर करो कोई भी सब्जेक्ट। when you are studying any subject, never think to remember the things, always you should learn to understand the things, to grab the things। वो प्रोसेस है, प्रोसेस में ऑटोमेटिकली हो जाएगा याद करने वाला पार्ट। कुछ फॉर्मूलास है तो वो अलग बात है, you can write it, you can mug up it, that's a different case, but while studying and never worry to remember, and while your process of preparation, never think that revision is a waste of time, and never think, never have a low confidence about your memory, your memory can do the magics, you are not having any deficiency, it is quite natural human thing to forget, it happens to everybody, इसलिए हम हमेशा रिफ्रेश करना, रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है। सो प्रैक्टिकल अप्रोच तो एग्जाम्स लिखो, इससे मेक योर दिस वन। सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देख के while solving it, even you have not revised this subject, you will appreciate your mind। आप चाहिए तो घर पे ट्राई करो ये प्रैक्टिकल अप्रोच, 10 रैंडम क्वेश्चंस उठा दो, ट्राई करो, यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर ब्रेन। अरे यार इतना याद है मेरे को, वेरी गुड यार, ठीक है, ऐसा होता है। एंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द गेट आर नॉट फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ये तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आर नॉट, ठीक है, सभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ठीक है, सो थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे दो, मैं अन अकेडमी का, आपको कुछ सब्सक्रिप्शन में दिक्कत है तो यू नीड सम फाइनेंशियल हेल्प, यू कॉल टू 858585 नंबर, यू विल गेट what we call the approval with minimal paperwork in 2 hours, and you can get the low cost EMI loan, ठीक है। सो न्यू बैचेस आर गोइंग ऑन, एंड 15 से कल नया बैच भी शुरू हुआ भाई, दैट इज फॉर मैथ्स। ओके, इफ यू वांट टू जॉइन अन अकेडमी, you can use my code and join an academy anytime। okay, shankar 10। सो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगा, प्रिपरेटरी प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन प्लस भी ले लो, यू गेट ऑल द टॉप क्लास एजुकेटर का क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एवरीथिंग। ओके, सो अदर देन दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, आई होप दीज इनपुट्स प्रैक्टिकल है भाई। ओके, you try it, definitely you will appreciate me। okay, with all my experience I have included these points। thank you very much for your time, all the best guys, let's crack it। so I'll answer your queries now। कोई भी questions है तो मैं देख के आंसर देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। आई कंप्लीटेड, संतोष का क्वेश्चन तो ये है, मेरा मैं तो 7 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किया सर, डिडेंट रिवाइज द सब्जेक्ट। अरे भाई अभी तक क्यों रिवाइज क्यों किया, ये तो गलत है। 7 सब्जेक्ट्स तक यू हैव नॉट रिवाइज्ड मींस देयर इज रिवीजन, जितना भी लेट किया तो उतना ज्यादा टाइम आपको अगेन स्पेंड करना चाहिए। सो कंपलसरी है, एटलीस्ट नाउ यू स्टार्ट योर रिवीजन। okay, so please don't be hurry to complete your subjects, first start your revision immediately। माय सजेशन गाइस, 3 और 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुरंत रिवीजन शुरू होना चाहिए, आइडियली 2 सब्जेक्ट के बाद भी रिवीजन शुरू करो, 2 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स होने के बाद रिवीजन शुरू होना चाहिए, डोंट वेट अप टू कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। ओके, नहीं मोहम्मद, सब्सक्रिप्शन इज नॉट फॉर सब्जेक्ट्स, इट्स फॉर ड्यूरेशन, यू मे टेक फॉर 6 months or 3 months, 6 months, बट नॉट फॉर सब्जेक्ट्स। ओके साहिल, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू विल नेवर फॉरगेट। केसीएल तो याद है ना, ये तो होता है कंपलसरी, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में कुछ फार्मूला से तो वो अलग बात है। ओके, सो डीबी में तो ये बोल रहा हूँ, आप लोग तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, नो नीड टू टेक 1 year और 2 year, उसमें यू कैन कंप्लीट योर 4 5 सब्जेक्ट्स। ओके, सो whenever you take the subscription guys, you can use the code shankar10, आपको 20% आज है तो डिस्काउंट भी मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एट द टाइम यू विल बी गेटिंग इट। कल सुबह 10 बजे मैं तो माइक्रो प्रोसेसर शुरू कर रहा हूँ, जो लोग प्लस पे नहीं है, यूट्यूब में है, आप लोग लर्न, यू वांट टू लर्न दिस सब्जेक्ट, आई विल हेल्प यू टुमारो। ओके, टुमारो 10 AM we'll meet। ओके, टुमारो 10 AM I will take it अजय, tomorrow 10 AM में तो I mean the session will be live soon, we can start tomorrow 10 AM, please come to the channel, we can start the micro course, right? Right, I hope I have cleared all your queries, and I hope you enjoyed the session, guys. All the very best. Thank you very much. Okay, please hit the like button. See you all soon. Love you all. Good night.